Our top focus on 11 Live is the war for thrones in Uttar Pradesh, where Priyanka Gandhi made her first public appearance this election season at a rally in Congress bastion and her mother's constituency, Raebareli. She packed a punch with relentless barbs on Prime Minister Modi, calling him an outsider. Let's get you 4 big political punches of Priyanka Gandhi from her joint rally with Rahul Gandhi today. मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूँगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके 2 नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी महान नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है, यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फिरवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों की बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में, बहुत साल हो गए। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक बात आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। यहाँ की महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी आपका जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ का जिक्र करते हैं। क्यों? मैं आप सबकी तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं। हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। आंख में आंख मिला के आपसे बात करें। आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले 6 महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे। From Uttar Pradesh, let's take you to Tamil Nadu, where after weeks of dramatic twist, the state is gearing up for the vote of confidence tomorrow that will hopefully put an end to the tug-of-war for power in the state after Jayalalitha's demise. Chief Minister E. Palaniswamy will have to prove majority in the House. The numbers are extremely crucial for both sides at this point, as the magical number is 118 in the 234 strength assembly, but now it is 116 because J. Jayalalitha, who's no more, and Karunanidhi will not vote. Palaniswamy has around 123 MLAs supporting him, while OPS has a dozen. The DMK has decided to vote against EPS, while the Congress will decide if it will abstain for voting or will vote tomorrow itself. The agitations were there. There were over a lakh of people who were hitting the street without even being formally organized. That's the spirit of the movement, as distinct from organizing something. So these are things which have got unorganized, but still there were over a lakh of people who are hitting the street today. And in my view, that is the kind of trigger which will force the MLAs
to do what is their duty. We really hope that the Speaker would give secret ballot tomorrow, and we've requested the Speaker, we have requested the Governor to direct the Speaker. We hope that they would have the courage to do a confidence vote tomorrow, a secret ballot tomorrow. From Tamil Nadu, let's take you to Kashmir, where two stark images with contrast are going to be on your screen in a while. The first, where protesters resorted to stone pelting in Srinagar near the Jama Masjid area despite army chief's warnings. And on the other hand, a 13-year-old girl making not just Kashmir but the entire country proud by becoming the state's new martial art hero. These people are singing a different tune of hope and also make the good news today of today. Meet the Kashmiri girl who is making headlines for very different reasons. In a valley embroiled in conflict, 13-year-old Noor al-Haya took to martial arts as a form of self-defense. मैंने ये गेम स्टार्ट 2015 में करी थी। 2015 में पहली बार मैंने पहला मैच जब मैंने खेला, तब मैं पहला मैच मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला। उधर पर मेरे को सिल्वर मेडल निकाला मैंने वहाँ। Noor fought the odds and slayed the competition to win a gold at the Tri-Nation Championship in Nepal earlier this year. Much of the credit goes to her doting father. सब पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि अपनी बेटियों की तरफ तरजीह दें और जितना वो ख्याल अपनी बेटों के लिए रखते हैं उससे ज़्यादा अपनी बेटियों के लिए तवज्जो करें। इंशाल्लाह जितना भी मुमकिन हो सके मुझे और जितना भी मुझे मेरा फर्ज बनता है उसमें मैं पीछे नहीं रह दूंगा इंशाल्लाह। With lack of training facilities and infrastructural failures, Noor did not have an easy way forward. ना ही हमारे को गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है, ना ही ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है। इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हमारे को। Noor's is not the only success story coming out of the valley. In November last year, 8-year-old Tajamul Islam from Bandipora created history for the state by winning the gold at the World Kickboxing Championship in Italy. The triumph of these young girls tells a story of hope amid unrest. It's also a story of inspiration for Kashmir's youth, blamed often for betraying from the mainstream. Bureau Report, India Today. After Noor, there's also Aqib Ahmed, who is giving inspiration to many people. A visually impaired teacher from Jammu and Kashmir's Kulgaon district has emerged as an inspiration for all the blind people in Kashmir. Ahmed teaches computers to visually impaired students in an institute in Srinagar, and the army has played an important role in his achievements. Ahmed, a born Kashmiri, was helped by the army to complete his schooling and introduce him to an NGO, the Jammu and Kashmir Welfare Association for Blinds. The army also encouraged him to learn Braille, which helped him complete his higher secondary education. He went on to enroll himself in a computer training course under the Braille system at the National Association for Blind in Delhi. And now he trains visually impaired youth in Kashmir in computers, leading them by example. तो मैं नैब गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग की, सिर्फ इसी पर्पज से जो यहाँ के विजुअली इम्पेयर्ड है उनको बाहर ना जाना पड़े, सिर्फ इस एसोसिएशन की बदौलत से। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली 4 महीने की। देन आई क्लियर माई फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर, एंड नाउ दिस एसोसिएशन वी आर वर्किंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, and we want to rehabilitate all the visually impaired of J&K. अगर इन्होंने कंप्यूटर सीखा बाहर से, तो अभी हमारे यहाँ पे जो हमने ये एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट खोला है, हम इसको यहाँ पे एज कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मतलब अभी हमने इनको रखा है। तो दैट मीन्स कि जब इन्होंने कंप्यूटर सीखा, इन्हीं के बेस पे हमने अब 5 स्टूडेंट लिए कंप्यूटर के लिए कि हम उनको यहाँ पे जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो यहाँ पे मतलब उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है।
A moment of merry turned tragic for thousands of devotees at the Lal Shehbaz Qalandar Shrine in Sehwan in Pakistan's Sindh yesterday. On late Thursday night, suddenly only terrified cries and ambulance sirens could be heard after a suicide bomber blew himself up at the shrine, spilling untold blood of around 1,000 innocents. Watch this detailed report. It was just another celebratory Thursday evening at the Lal Shehbaz Qalandar Shrine in Sehwan, in Pakistan's Sindh province. 200 kilometers from Karachi, thousands of devotees were in attendance for this annual Sufi ritual. Suddenly, terrified cries and ambulance silence echoed around the shrine. One of Pakistan's deadliest attacks, at least 100 innocent lives were lost and more than 250 severely wounded, including women and children. A suicide bomber blew himself up at the threshold of the shrine, spilling untold blood, but there was worse to come. The ISIS claimed responsibility for the attack, making it their first such attack on Pakistani soil. But the Pakistani army has its own doubts, instead suspecting Afghan terror forces and not the ISIS. All borders with Afghanistan were sealed. भाई जैसे ही इंटर हुए कोई पता ही नहीं चला। इंटर होने के फ़ौरन बाद एक भयानक सी आवाज़ आई। तब तो कोई ख्याल नहीं था कि कोई बम ब्लास्ट है, लेकिन ये अचानक ख्याल आया कि आज हम मर गए। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई क़यामत का मंजर हो। मैंने यहाँ पे देखा कि क़यामत सुगरा जैसा मंजर था। यहाँ पे दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अंदर अहाते में यहाँ जो सहन है पूरा, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन थे, रो रहे थे। क़यामत सुगरा जैसा मंजर था, कोई किसी को उठाने वाला नहीं था। Questions have been raised on the security at the shrine as well. यहाँ जो सिक्योरिटी का इंतजाम है ना, वो बिल्कुल नाकस है, और यहाँ जो गैर रजिस्टर्ड मुसाफिर खाने हैं ना, उन पे कड़ी अगर नज़र रखी जाए ना, तो ऐसे जो हादसात है ना, वो आइंदा ना आ सकते हैं। 24 hours later, another terror attack was reported from the Pak-Afghanistan border. 2 army personnel were severely injured. Pak army vowed vengeance and soon launched a security crackdown across the country. 37 terrorists were reportedly gunned down in encounters. As Pakistan picks up the pieces of its own citizens, could this be only another ignored lesson for a country that has always nurtured terror as state policy? Bureau Report, India Today. On that note, it's time to wrap up this edition of 11 Live. Good night, goodbye.